गला था। गुड इवनिंग एवरीवन। तो टिके खाली कंफर्म करो वॉइस टा ठीक है ना नहीं। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आशीष गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशीष। रमाकांत गुड इवनिंग। ग्रेसफुल गसिप स्टार्ट सर। या संगे संगे स्टार्ट करिया। आशीष आशीष पंडा, प्रजुक्ता, प्रीति युष्णा, ऋतिका, गीतांजलि, गायत्री, प्रतीक्षा, आशीष जल्दी जल्दी पिला जॉइन कर जाओ, देन इमीडिएटली हम स्टार्ट करिया। ठीक अछि। एंड काली हमें रिप्रोडक्शन रो पार्ट 1 डिस्कशन करथिले, तो आज हमें पार्ट 2 एंड आउ किछि नुवा वेराइटी रो क्वेश्चन एंड डिस्कशन करिया। तो नियत रूपे फर्स्ट पार्ट रो क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट रो क्वेश्चन भ्यारी रहइबो एंड चैप्टर को कवर अप कला बेला क्वेश्चन रहइबो। तो जल्दी जल्दी इमीडिएटली आउ जो पिला सब अछन हमर जॉइन कर जातो, देन हमें स्टार्ट करिया। ठीक अछि। काली रो क्वेश्चन विषय रे तो मते फर्स्ट को जो तुम क्वेश्चन पचरे जीवो, generally first question मत को, what is the temperature inside the scrotum? What is the temperature inside the scrotum? That is less than the body temperature or more than the body temperature? सर फर्स्ट ईयर पाठ टिके पढ़ांतु। फर्स्ट ईयर पाठ ऑलरेडी हमरो ब्रीदिंग हो, दैट इज हार्मोन हो, सर्कुलेशन हो, डाइजेशन हो, हार्मोन हो, ऑलरेडी यार वीडियो अपलोड अछि, तुम देखि परियो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, if the testis is failure to descend into the scrotum, हम जदी कहबा दैट इज टेस्टिस टा जदी फेल होछि स्क्रोटम भितरु डिसेंड हवारे बा रिलीज हवारे, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज failure of a testis to descend into the scrotum, and the term is called as Soyam 2 to 5 degree Arpita ready. Failure of testis to descend into the scrotum, cryptorchidism, right? Perfect. 2 to 5 degrees Celsius, cryptorchidism ready. Then inside the seminiferous tubules, there are two types of cells, and one cell is male germ cell and another one is inside the seminiferous tubule. There are two types of cells, and the one cell is called as male germ cell or sperm stem cell or sperm mother cell, and another one is male germ cell and Sertoli cell, right? तो ठीक अछि। तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करा, देन गोटे लास्ट दीटा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जेमति कि जेतबेले हमें काली गोटे कंडीशन पढिथिले, जेतबेले गोटे बेबीटा मार ओम रे एंड द अदर नेम ऑफ द ओम इज यूटेरस। तो यूटेरस रे बा ओम रे जेतबेले गोटे बेबी रो डेवलपमेंट हुए, तो तीनटा ट्राइमेस्टर दाए बा हमें जेमति कहिया दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर। which is the most dangerous, बा को ट्राइमेस्टर रे मदर को बहुत सारा केयर फॉलो अप करे पड़िबो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड और थर्ड, कोन हबो? दीपांजलि हेलो सर, हेलो। को ट्राइमेस्टर रे मदर को पूरा भल से केयरफुली रहया पड़ियो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमें देखिया द मैक्सिमम ऑर्गन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो प्रथम 3 मास, फर्स्ट मास, सेकंड मंथ एंड द थर्ड मंथ, एई तीनटा मंथ रे बा प्रथम ट्राइमेस्टर माने प्रथम 3 मास, सेकंड ट्राइमेस्टर माने 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, थर्ड ट्राइमेस्टर माने 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बा प्रथम 3 मास रे मदर को केयर रहर अछि, मदर शुड प्रिवेंट द अल्कोहल कंज्यूमिंग, आल्सो मदर को दैट इज द सिगरेट स्मोकिंग रू भी निज को प्रिवेंट करे अछि, एंड जदी पार्टनर बा जदी हस्बैंड भी अल्कोहल कंज्यूम करछि सेथरो भी ताको दूरे रहर अछि, एंड आल्सो जदी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एनवायरनमेंट रहउछि सेथरो भी दूरे रहर दरकार। एंड जदी को एरिया रे गोटे रहउतियो सेठी खाली गोटे साइड रे गोटे कल कारखाना खाली घं घं करके धुआं बाहर करतियो, पूरा कला कलर पूरा जदी 1900 मसिया गाड़ी जेमति धुआं बाहर करे से बडा धुआं एरिया रे रहउतियो, तो से केस रे भी दैट इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऊपर इफेक्ट पकई पारे, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज फोकोमिलिया। तमे देखि परियो फोकोमिलिया कंडीशन रे दैट इज पिलाटा एज यूजुअल थिबो बट तार गोड़ नथिबो, पूरा एग्जैक्टली सब ठीक ठाक हेतिबो, एंड पूरा सलमान खान वाला देखिया पई किंतु गोड़ नथिबो एंड हाथ नथिबो। तो दिस कंडीशन इज फोकोमिलिया, बट दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफॉर्म्ड बेबी, बा नॉर्मल बेबी थारो abnormal बेबी फॉर्मेशन हे पारे ड्यू टू द सर मोर फास्ट आंसर देछि कमलेंदु, राइट? तो चलो हमर फर्स्ट क्वेश्चन आउ के पिला अछन जल्दी जल्दी जॉइन करो, देना पढ़िया। एंड मन रखिबो प्रथम मासे रे द मोस्ट important organ heart is formed, and according to NCERT strictly it is mentioned in NCERT
प्रथम मासरे द बेबी रो हार्ट फॉर्मेशन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस इन द फर्स्ट मंथ व्हिच ऑर्गन इज डेवलप फास्ट एंड द आंसर इज हार्ट. चलो then second question, human heart is myogenic or neurogenic? Human heart is myogenic and neurogenic. Then हम start करिए हमारा as usual question, human heart is myogenic or neurogenic in nature. यदि ह्यूमन हार्ट गोटे पंप हुए ताले से पंप को स्टार्ट करया पे आउटर रू कोन इंपल्स आसे ना हार्ट निजे निजे से इंपल्स को क्रिएट करे, and that is myogenic in nature. चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन, each spermatogonium dash and dash number of chromosome. गोटे स्पर्माटोगोनियम रे दैट इज यदि कहया 2n23 ना 2n46 कौन आंसर? आराम से पढ़ो, पूरा परफेक्टली आंसर दियो. काली हमें देखिथिले दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस and then testis with compartments, there are so many compartments or we can say that 250 to 300 compartments by each testis has a 250 compartment and the compartment को हमें कहते testicular lobule and testicular lobule भितर there is a tubule, seminiferous tubule, then seminiferous tubule भितर male germ cell and Sertoli cell. This is important. Seminiferous tubule two types of cell, male germ cell, Sertoli cell. तो क्वेश्चन पचारछि male germ cell बा स्पर्माटोगोनिया रे केते, दैट इज हमें जो देखिया प्लॉइडिटी 2n एंड द क्रोमोसोम नंबर इज 46, 2n एंड 46 कौन आंसर? सुब्रत जल्दी जल्दी शेयर करो एंड अलगा पिला माने जो हम रहि गले ताको डाको सोई पडिछंती. देन आंसर इज 2n एंड 46. देन एठी मोर ओटा सिंपली क्वेश्चन तुम पाउ रहइबो, स्पर्माटोगोनिया, सपोज दिस इज द स्पर्माटोगोनिया एंड हम स्पर्माटोगोनिया को भिडिग्री बाहर करछे फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल. सेमिनिफेरस ट्यूबुल भितर स्पर्माटोगोनिया अछि. तो स्पर्माटोगोनिया को जेतबेला हमें रिलीज करले फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जस्ट भाबो रिलीज करिक हमें ब्लैक बोर्ड रे ताको देखौछे. तो स्पर्माटोगोनिया बहुत सारा स्पर्माटोगोनिया प्रोड्यूस करिया पई फर्स्ट को प्रोसेस फॉलो करिवो, माइटोसिस और मेयोसिस. माइटोसिस और मेयोसिस. स्पर्माटोगोनिया that is first mitosis karibo to produce more and more spermatogonia or it will follow the meiosis to produce more and more spermatogonia. कौन आंसर? स्पर्माटोगोनिया बहुत सारा स्पर्माटोगोनिया प्रोड्यूस करे पे फर्स्ट माइटोसिस, राइट? यू हैव टू रिमेंबर दैट इज फर्स्ट माइटोसिस बा जाको हम कहूचे इक्वेशनल डिवीजन. फॉर एग्जांपल यदि मो माइटोसिस करबी तो मो बोले एग्जैक्टली दीटा कॉपी फॉर्मेशन हो एंड यू विल बी कंफ्यूजन अबाउट हु इज द ओरिजिनल एंड हु इज द डुप्लीकेट. देन माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन बहुत सारा स्पर्माटोगोनिया प्रोड्यूस होला. Then one of the spermatogonia आमे दाउ कहि परिया कोन ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट. Then it will go to the meiosis one and produce the secondary spermatocyte. Then secondary spermatocyte meiosis 2 करिवो and produce करिवो spermatid. तो क्वेश्चन जो तुम पचरा जीवो that is जदि स्पर्माटोगोनिया रो 2n हैला ताले स्पर्म रो केते हबो? n और 2n. स्पर्म रो n और 2n कोन आंसर? आयशा, कविता, शुभलक्ष्मी, सत्य, भूमिका, श्रद्धा किटू, अनन्या, वॉइस ऑफ कृष्णा, पायल, चंदन. देन आंसर इज दैट इज यदि जनरली हमें देखिया स्पर्म रो n. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पर्माटोगोनिया व्हिच अंडरगो मेयोसिस आर नोन एज. द स्पर्माटोगोनिया व्हिच अंडरगो मेयोसिस आर नोन एज कोन हो? स्पर्माटोगोनिया जोटा मेयोसिस करे आंसर कोन हो? स्पर्म, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. कोटा मेयोसिस करे? स्पर्माटोगोनिया व्हिच अंडरगो मेयोसिस. हमें जानि छे जदि स्पर्माटोगोनिया जेतोले माइटोसिस करके बहुत सारा स्पर्माटोगोनिया प्रोड्यूस कला ता दिरु गोटे स्पर्माटोगोनिया को हमें कोन कहले ना दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बा 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ता मेयोसिस करूथला एंड प्रोड्यूस करथला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तार आंसर कोन हबो? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक अछि, डी. बढ़िया, समस्त के आंसर परफेक्ट. एही बळे आंसर ही दरकार. देखो क्लियरली तमे बुझी परछो आंसर केमिति प्राइमरी. त क्वेश्चन पचाला कि होची मेयोसिस को करे दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. बढ़िया, परफेक्ट, समस्त के आंसर परफेक्ट आंसर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. बढ़िया. तापर मते को व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? What is the spermiogenesis?
देखिए कहार फर्स्ट आंसर स्पर्मियोजेनेसिस आशीष आशीष नेहा क्राफ्ट फास्ट आंसर कौन व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस ऑप्शन दउची स्पर्माटोगोनिया टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ऑप्शन दउची स्पर्माटोगोनिया टू स्पर्म or the other name of the sperm is spermatozoa then or spermatid to spermatozoa दीटा ऑप्शन दउची स्पर्माटिड रु स्पर्माटोजोआ प्रोसीजर को कहा जाए स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्माटोगोनिया टू मैच्योर स्पर्म पीसीएम क्लास हेइनी कि खाली पीसीबी ऑलरेडी तमर मैथ क्लास तो अवेलेबल अछि एंड फिजिक्स क्लास केमिस्ट्री क्लास भी अवेलेबल अछि तमे जीवो विद्यासागर चैनल रो देन प्लेलिस्ट रे जाय कि लाइव सेशन में चेक करि परिबो ठीक अछि formation of spermatid to spermatozoa this is called as the spermiogenesis right मन रखिबो ताले other name of the sperm you have to remember that is spermatozoa बा spermatozoa को जदि हमें कहया full name आ तार डाक ना होची sperm तो सर्टिफिकेट नेम होची spermatozoa and the डाक नाटा होची sperm the process in which mature sperm produced from spermatid right queen nibu hi इतिश्री लक्ष्मी कविता तृप्ति सुब्रत चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्पर्म्स आर सिनोनिम्स विथ बस एई क्वेश्चन एबे संगे संगे में डिस्कशन करले बस स्पर्म रो भलो ना कोन सर्टिफिकेट नेम कोन एंड द डाको ना कोन आधार कार्ड प्रियांशु आधार कार्ड नेम होची तार स्पर्माटोजोआ एंड तार स्कूल ना होची दैट इज स्पर्म आधार कार्ड नेम तो कौन होगा आंसर द स्पर्म्स सिनोनिम्स विथ गुड इवनिंग सुब्रजीत वेलकम स्पर्माटिड ना स्पर्माटोगोनिया ना स्पर्माटोजोआ राइट द आंसर इज स्पर्माटोजोआ परफेक्ट तापर मते को सपोज दिस इज द LH is secreted from anterior pituitary or posterior pituitary the luteinizing hormone or the luteinizing hormone one of the gonadotropin hormone which is released from the anterior pituitary or from the posterior pituitary कौन आंसर LH is released from the anterior pituitary or from the posterior pituitary टिके स्लो चलची की लैपटॉप रे कौन आंसर या राइट anterior pituitary तो हमें कहिबा that is anterior pituitary रो रिलीज हुए LH then my question is LH act on Leydig cell of LH को cell पर act करे in case of male Leydig cell and second option that is Sertoli cell and the third option here is that is male germ cell को cell रे LH टा act करे for the production of testosterone कौन हो आंसर शुभ्रा चिन्मय anterior प्रीति प्रिया इतिश्री right the perfect answer is LH act on the Leydig cell LL ठीक अछि learning license LL and DL that is LL बा Leydig LH act on the Leydig cell LL चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेमती FSH टा को सेल ऐड करिवो इन केस ऑफ मेल FSH act on which cell in case of male for the process of spermiogenesis FSH को सेल ऐड करिवो ऑप्शन 1 Sertoli cell ऑप्शन 2 Leydig cell and third one is male germ cell कौन होबो FSH को ऐड करिवो सर ए सब क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तुमको तमरो स्क्रीन रे जो क्वेश्चन शो करछि ता बाद मु तुमको एक्स्ट्रा एमती नाही कि एई क्वेश्चन को नै कि हम डिराइव करछु एई क्वेश्चन को रिलेट करी कोन कोन क्वेश्चन पचारि परिबो तो कंप्लीटली जार चैप्टर विषय टिके नॉलेज थिबो तो 100% से रिलेट करि परिबो एंड एनफ आराम से एनफ किछि प्रॉब्लम नै FSH act on Sertoli cell right and मन रखे पई FSH तो एस रे कोन अछि एस रे Sertoli cell अछि तो मन रखे पई तमे भाबी परिबो दैट इज FSH act on the Sertoli cell for the process of spermiogenesis
एंड ऑलरेडी तुम जानिछ स्पर्मियोजेनेसिस कोन स्पर्माटिड रु स्पर्माटोजोआ सो स्ट्रिक्टली मन रखिबो एल 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 एच टा ऐड करिवो लेडिक सेल रे एंड एफएसएच रे एफ फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐड करिवो सर्टोली सेल फॉर द स्पर्मियोजेनेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन स्पर्मियोजेनेसिस इज देखो सेम क्वेश्चन पचराला व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस आसीबो क्वेश्चन व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस विजयलक्ष्मी सुब्रत चंदन पंकज अनन्या सुब्रत कविता ब्रिजेश पढ़िया अंकिता सर मु +3 फर्स्ट ईयर ओयूटी एग्जाम दे परियो 100% दे परियो अप्लाई करछो तो फॉर्म ए जदी अप्लाई करछो देन यू आर एलिजिबल फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 4th एंड 6th जून तो आराम से दे परियो किछि प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन लेवल अप केबे होबो देखो एई क्वेश्चन को नेकी रे आगर जतिटा क्वेश्चन अछि ता भीतर तमे होल ओवर द चैप्टर कवर अप हि जीवो दैट इज आंसर इज स्पर्माटिड रो स्पर्माटोजोआ नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इन द व्हिच सेल आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इन व्हिच सेल आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस the sperm head is embedded in which cell suppose this is the seminiferous tubule these cells are called as male germ cell and these are the Sertoli cell this is the male germ cell and this one is the Sertoli cell right तो male germ cell तो sperm production कर साला परे sperm रो head टा को cell सो attach हेकी थाए because हमें जानि छे Sertoli cell रो function होची to provide the nourishment so nourishment by obviously sperm ta kahadre chipke ki rahibo to the Sertoli cell right after the spermiogenesis sperm head is embedded in the Sertoli cell next question the placenta is connected with the embryo through dash cords placenta is connected to the embryo with the dash cord chorionic amniocentic umbilical na uterine kon answer what is your answer here a chorionic Sertoli कौन आंसर एटा umbilical cord आंसर कौन होबो ताले डी uterine connected through the uterine cord या umbilical cords b umbilical cord suppose this is the mother uterus and हमें जानि छे जेतोले ट्रोपोब्लास्ट था suppose टिके रफ डायग्राम करिया suppose this is the endometrium lining and endometrium lining रे जेतोले blastocyst will attached blastocyst रो स्ट्रक्चर हमें जे देखिया that is the outer trophoblast and inner cell mass तो trophoblast cell again divide over syncytotrophoblast and cytotrophoblast तो syncytotrophoblast cytotrophoblast and that is the uterine tissue ये सब मिसी की फॉर्मेशन करिवे कोन ना द प्लासेंटा देन सपोज दिस इज द एम्ब्रियो तो प्लासेंटा रु एम्ब्रियो भीतर कनेक्शन आ पई देयर इज ए कॉर्ड कॉल्ड एज umbilical cord ठीक अछि बा जो umbilical cord को पिलाटा जन्म हे गला परे दैट इज क्लिप मारी की कटा जाय गो किछि सेंटीमीटर मदर रो पेट ये रु एंड सॉरी मदर रो एंड आल्सो किछि सेंटीमीटर रो दैट इज नाई पाखरे कटा जाय पिला umbilical cord प्लासेंटा कनेक्ट विथ द एम्ब्रियो थ्रू द umbilical cord then the average time span of a human gestation sir मोर फर्स्ट आंसर तले आपण देखिले रितिका तमर फर्स्ट आंसर राइट परफेक्ट कोन होबो देखो ओटे बढ़िया जिंस कहिया ए क्वेश्चन परे द एवरेज टाइम स्पैन ऑफ ह्यूमन gestation या परे मोस्ट क्वेश्चन प्लासेंटा इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड परफेक्ट hcg hpl will release from the placenta ठीक अछि कोन आंसर दैट इज 9 month तापर मते को suppose this is the endometrium lining and this is the vagina and this is the fallopian tube question kono this is the ovary and the finger like projection of the fallopian tube ro length जो देखिया 10 ରୁ 12 cm and my question is the finger like projection of the fallopian tube is called as finger like projection
प्रोजेक्शन ऑफ द fallopian tube ये जो छोटो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन कुआ जाए आशीष ब्रिजेश प्रीतिप्रिया द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द fallopian tube is called as fimbriae, right? This finger like position is called as fimbriae. So suppose this is the cycle or the menstrual cycle or the reproductive cycle and 14th day रे ovulation हैला ovulation कौन हैला ना that is secondary oocyte गला ampulla isthmus junction then fertilization हैला then fertilization अपरे two cell stage and each daughter cell is called as blastomere then 4 cell then 16 cell my question is 16 cell stage को कौन कहा जाए ऑप्शन मोरुला ना ब्लास्टुला ना गैस्ट्रुला ना ब्लास्टोसिस्ट 16 cell stage 16 cell stage called as soyum that is morula and second question को stage रे ऑप्शन मोरुला ना ब्लास्टोसिस्ट को स्टेज रे एंडोमेट्रियम लाइनिंग रे जाके अटैचमेंट हबो दैट इज को स्टेज रे मोरुला ना ब्लास्टोसिस्ट व्हिच स्ट्रक्चर विल अटैच विथ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग नॉट व्हिच स्ट्रक्चर मोरुला ना ब्लास्टोसिस्ट विल अटैच विथ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड द आंसर इज ब्लास्टोसिस्ट देखो जेतेबेले ब्लास्टोसिस्ट टा एंडोमेट्रियम लाइनिंग रे अटैच हबो सेतेबेले एंडोमेट्रियम लाइनिंग टा जस्ट लाइक गोटे थिबो कोहुला कहलो कुकुडार अंडा भलिया माने जस्ट एंडोमेट्रियम लाइनिंग टा जस्ट गोटे कुकुडार अंडा भलिया आ ब्लास्टोसिस्ट जो अटैचमेंट हबो से देखाउते गोटे पेन रो डॉट भलिया तो भाबो गोटे कुकुडार अंडा जेतिकी साइज रो यूट्रस थिबो एंड फर्टिलाइजेशन हे गेला पर दैट इज ओवम एंड स्पर्म रो फर्टिलाइजेशन होला पर प्रोडक्शन करिवे टू सेल स्टेज जा को हमें दीटा डॉटर सेल को ब्लास्टोमेयर कहूचे देन टू सेल रो फोर सेल रो 8 एंड 16 सेल स्टेज को कहले मोरुला then 16 cells टा कन्वर्टेड हो ब्लास्टोसिस्ट तो जदी एई स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट भाबिया तो ब्लास्टोसिस्ट जेतबेला अटैचमेंट हो आर स्ट्रक्चर गोटे पेन रो डॉट भलिया आ दैट इज द एंडोमेट्रियम लाइनिंग टा गोटे कुकुडार अंडा भलिया देखा होथिबो देन एठी क्वेश्चन होची जदी हम ब्लास्टोसिस्ट रो स्ट्रक्चर देखिया तो जस्ट लाइक एई बडा तार सेल रो स्ट्रक्चर देखिया किछि सेल टा होची पूरा आउटर वाइड रे थिबे जा को हम कोन कहूचे दैट इज ट्रोपोब्लास्ट सेल यू हैव टू रिमेंबर ब्लास्टोसिस्ट रो सेल अरेंजमेंट केमती ना द आउटर ट्रोपोब्लास्ट बा आउटर सेल टा ट्रोपोब्लास्ट एंड द इनर सेल इज इनर सेल मास तो माय क्वेश्चन इज ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास जोटा कि गोटे ब्लास्टोसिस्ट रो जदी स्ट्रक्चर करिया ताले को सेल टा अटैचमेंट हुए इन द यूटेराइन और इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास व्हिच इज directly attached with the endometrium lining tropoblast or inner cell mass suppose these are the inner cell mass and this is the outer trophoblast tale ko cell ta attach हुए in the endometrium lining soyam that is gayatri trophoblast very important and मन रखियो trophoblast cell ta again divide हो for example this is the blastocyst structure and blastocyst structure ଭିତରେ outer टा होची trophoblast ए structure टा attachment हबो ठीक अछि and inner this is the inner cell mass and trophoblast cell जेमते attachment हबो divide हे जिवो काहाकू ना trophoblast cell टा divide हे जिवो syncytiotropoblast काई ये कथाटा कहूची important syncytiotropoblast and cytotrophoblast ठीक अछि and very important syncytiotropoblast will release HCG तो जेतो बळे देखो 14th डे रे कोन हला ना दैट इज ओव्यूलेशन हे गला तो 14th डे रु 28 तारिख आडी गला बेलकू वर्तमान पई इम्प्लांटेशन हे जेछि तो नेक्स्ट मंथ रे जेतोले ब्लीडिंग होबा कथा इफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विल absent in the next month काहेकि ना फर्टिलाइजेशन हे करी जेतोले इम्प्लांटेशन हे जेछि आउ ब्लीडिंग हबोनी तो ऑब्वियसली दैट इज फीमेल विल चेक कोन पई ब्लीडिंग हेला नि ए मंथ रे एंड जेतोले से चेक करिवो यूरिन रो टेस्ट करिवो एंड जो टेस्ट को हमें कहउछे ग्राविडेक्स टेस्ट दैट इज ग्राविडेक्स टेस्ट बा जोटा आई प्रेगा न्यूज देन प्रेगा केयर आई केयर प्रेगा तो एई सारा जो किट यूज करके जेतोले यूरिन रो टेस्ट करा जिवो एंड एट दैट टाइम द फीमेल विल फाइंड दैट इज यूरिन पॉजिटिव जेतोले आसीबो को जिंसटा यूरिन रे अछि बोली पॉजिटिव शो करछि दैट इज एचसीजी तो क्वेश्चन इज very important you have to remember that is जेतोले
blastocyst attachment of in the endometrium lining. The blastocyst will differentiated into the syncytiotropoblast and the cytotrophoblast. Then syncytiotropoblast will release HCG. Then urine रे HCG ର डिटेक्शन जेतବେଳେ हुए तो सेटा ही कोन करे ना दैट इज मेंस्ट्रुएशन हेइनी कोन पई ना HCG आसीची एंड HCG केतବେଳେ आसीबो इम्प्लांटेशन हेइ जाईची. देन फीमेल श्योर हेइ जिवो दैट इज इम्प्लांटेशन ऑलरेडी हेइ जाईची सो दैट आउ मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड होउनी काहे कि ना मेंस्ट्रुएशन होबा पई ए एंडोमेट्रियम लाइनिंग ता छिंडिया दरकार बा रिलीज होबा दरकार एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करियार काम कार कार्पस लुटियम रो. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The pregnancy phase human is divided into how many trimester? Sir, which is outer? Outer is trophoblast and inner cell mass is inners. कौन अब आंसर? Good evening sir. Samir, good evening. Deepika, Vijayalakshmi, Chandan. The pregnancy phase in human is divided how many trimester? এটা তো আমি করছিলাম 3 trimester. After 1 month of pregnancy, which vital organ is formed? 1 month of pregnancy रे को vital organ टा form हुए. कौन आंसर? सर प्लांट ब्रीडिंग रो चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग. ठीक अछि आसीबो. पायल, सरस्वती, अंकिता, विजयलक्ष्मी, प्रीति, ज्योत्सना, प्रीति, अंकिता फर्स्ट मंथ रे दैट इज हार्ट टा फॉर्मेशन एंड बेबी रे जेतोले डॉक्टर जेतोले चेक करिवे स्टेथोस्कोप रे दैट इज हार्ट बीट टा सुना जीवो बेबी रो. एंड मन रखिबो जेतोले गोटे पिलाटा 0 रु 8 वीक पर्यंत हेइतिबो सेतोले हमें ताको कहया एम्ब्रियो एंड 9 वीक रु 9 मंथ पर्यंत ताको हमें एम्ब्रियो कहि पारेनी ताको हमें कहया फिटस. देन जन्म नै गला परे देन ताको हमें कहबा दैट इज कोन इन्फेंट कहया चाइल्डहुड कहया ए सब द 0 टू 8 वीक पर्यंत एम्ब्रियो देन 9 वीक रु 9 मंथ पर्यंत फिटस. ठीक अछि. देन जेतोले 9 मास हेइ जिवो एंड बेबी रो जेतोले टाइम हेइ जिवो टू रिलीज आउट एंड द ह्यूमन बेबी कोन त हमें जे देखिया द fetus is selfish. why the fetus is selfish? when it gain the maturity of 9 months जेतोले 9 मास मारो ओम रे रहि गला why I am saying it is selfish तो that is से थी भाबियो तो I must do something to release out मते किछि करियर अछि जेमति कि मु मदर रो ओम रो बाहर अछि काहे कि ना मते मोर एंड न्यूट्रिशन दरकार एंड मु एबे डेवलप हे गलानी एंड गोड़ हाथ हलिया पे मते जागा नै तो यूटेरस को कोन करिवो ना दैट इज किक मारिवो जा को जाय द बेबी टा किक मारे बोली बा पिला लात मारे बोली तो देन जेतोले किक मारिवो तो सेई टाइम रे हम जानि छे द यूटेराइन वाल ऊपर जेतोले सिग्नल टा पहुंचबो टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस देन आस्ते आस्ते मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हबो एंड लेबर पेन स्टार्ट हबो देन बेबी टा रिलीज हे जिवो बाहर को. ठीक अछि चलो एंड बेबी टा बाहर आबला सबोल पे हम जानि छे दैट इज द हेड शुड बी द फर्स्ट पोजीशन टू रिलीज आउट मुंडटा आग रहा दरकार नहले जदी सोनोग्राफी करी कि जणा पड़ी गला कि बेबी रो मुंडटा नाही दैट इज टुवर्ड्स द वजाइना देन ए केस रे पिला को ब्रीच कंडीशन को जाय बा मोडी माडी हे कि जदी अछि किबा गोडटा जदी अछि किबा हाथ गोड ए सब जदी रहि हेछि पूरा माने गोड गुडा बंका हे कि रहिछि fetal ejection reflex right fetal ejection reflex then it is called as breech condition बा पिलार जेतबेले मुंडटा नथिबो अलगा जिंस गुडा को बाहर को आइथिबो सो तो ब्रीच कंडीशन रे आउ नॉर्मल डिलीवरी हुएनी दैट इज सिजेरियन सेक्शन बा सीएस करा जाय राइट. राजा सर जस्ट लाइक पुष्पा भाउ जोश हार्ट सर ओ माय गॉड पुष्पा भाउ देन एंड केते दिन तमे कैलकुलेशन करि परिबो दैट इज गोटे बेबी रो डेवलपमेंट होबा पई जोटा को जाय LNMP बा जहा को हम कहि परिया लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड बा जो मंथ रे मेंस्ट्रुएशन पीरियड बा जति कि हमर ब्लीडिंग टा स्टॉप होईची प्लस 40 वीक्स एठो प्लस 40 वीक मिसई दबो जति कि दिन हबो सेति कि दिन रे बेबी डिलीवर हुए एंड बट तादरे 19-20 2 वीक मिसई दो माने भाबिबो कि जति कि एई मंथ रे जति ब्लीडिंग टा स्टॉप होईची ताले बेबी टा को मास बेल को जन्म होइथिबो देन कैलकुलेशन करि परिबो प्लस 40 वीक्स LNMP माने दैट इज लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड बा जो मासरे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप होईची प्लस 40 वीक्स एंड प्लस -2 एपट सपट हेई पारे
280 days. चलो next. It is a developing fetus. Most of the major organ system are developed by the end of dash week. And एटा ही हमें कहले that is फोकोमालिया condition हेई पारे 280 to 90 days. Fetal ejection reflex जेतबेला at the time of parturition बा जेतबेला टाइम पळे आसीबो that is fetus रो गोटे signal जीवो towards the hypothalamus of the mother. Then mother will release the oxytocin and oxytocin will act on the myometrium. Then the myometrium will contract and the baby will release out from the womb, right? And it will see a new environment. 12 weeks. In a developing fetus, most of the major organ system are developed by the end of 12 weeks. Very very important. The first trimester end बा प्रथम मास गोटे मास केते सप्ताह 1 month, that is 4 week. तो 3 मास 3 month बा हम कहि परिया 12 week. तो 12 week बा हम 3 मास एंड बेलकू मेजर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाइथिबो ना. ठीक अछि. एंड माय क्वेश्चन इज फास्ट मूवमेंट बेबी प्रथमे मूवमेंट करे को मंथ रे. फास्ट मूवमेंट ऑफ बेबी, फास्ट मूवमेंट ऑफ बेबी कोन हबो? चित्रलेखा, विजयिनी, पायल, कविता, दीपांजलि, अंकिता, इतिश्री, शुभलक्ष्मी, तृप्ति, ऋतिका, सौम्यश्री, स्वयंप्रभा, भॉइस ऑफ कृष्ण, श्रद्धा किटू, संजुला, सुनयना, लिपिका, प्रियांशु, स्वयं, प्रतीक्षा, श्रद्धा किटू. फिफ्थ मन रखियो दैट इज इन द मंथ ऑफ फिफ्थ मंथ दैट इज कौन हुए ना बेबी टा मूवमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस एट द मंथ ऑफ फिफ्थ वीक. ठीक अछि. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जे तुम पचरा जीवो ताले तुम क्वेश्चन पचला आसीबो. तो एचसीजी टा की रिलीज करे? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करे किए? ट्रोपोब्लास्ट ना इनर सेल मास. देन आंसर द ट्रोपोब्लास्ट. को ट्रोपोब्लास्ट सिंसियो ना साइटो? देन आंसर इज सिंसियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट कोन हबो? Select the true statement. Presence of hymen is a reliable indicator of virginity. Absence of hymen is a reliable indicator of sexual experience. Presence of hymen is a reliable indicator of sexual experience. Presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity. कौन होगा? Answer is last one, Vijayini. Yeah, right. And in our society, we are always blaming to a female by the examining of that is hymen. हाइमेन रो प्रेजेंट एंड एब्सेंट को नेगिरी सोसाइटी रे ऑलवेज फीमेल माने को ब्लेम करा जाय एंड इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. दैट इज हाइमेन रप्चर होबार बहुत सारा रीजन थाए एंड मोस्ट ऑफ द रीजंस आर फॉर एग्जांपल इफ द फीमेल इज राइडिंग द साइकिल एंड इफ द फीमेल इज राइडिंग द हॉर्स और इफ ए फीमेल इज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एनीथिंग दैट इज हाइमेन रप्चर होबार बहुत सारा रीजन थाए एंड सो दैट वी शुड नॉट ब्लेम द फीमेल बाय ऑब्जर्विंग दिस टाइप ऑफ हाइमेन को नहीं करी. तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. ठीक अछि. चलो नेक्स्ट, व्हिच इज द करेक्ट पाथ ऑफ द सिक्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क इन द ममेरी ग्लैंड? राइट. फर्स्ट मते को ए क्वेश्चन पूर्वरु एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स. राइट. तो माय क्वेश्चन इज आगो क्वेश्चन टा को ऑक्सीटोसिन एंड भासोप्रेसिन. Oxytocin and prolactin, which is the milk producing hormone and which is the milk releasing hormone? Oxytocin and vasopressin, which is the milk producing hormone and which one is the milk releasing hormone? First one, active first one alveoli. Then here the answer is first one. पढ़िया को ट्रिक रे मन रखिया पे कोन कहया बट ए क्वेश्चन दियो आको भितरु मिल्क producing hormone किए then which is the milk releasing hormone? Oxytocin is milk producing. Vijayini. Oxytocin is milk releasing. Prolactin is milk producing. Releasing is prolactin. Prolactin is producing. कार आंसर ठीक है बता ले. Oxytocin milk releasing hormone. Anita production. Prolactin release oxytocin. Right answer is oxytocin milk releasing. Then a question हमें already हम पचार सारी जेतले हम हार्मोन डिस्कशन करथिले हम कहितली दैट इज प्रोलैक्टिन इज ए हार्मोन व्हिच इज रिलीज फ्रॉम द anterior pituitary and prolactin which is much more important for the milk production
and oxytocin will not consider how much milk is produced. Oxytocin ର କାମ ହେଉଛି just to ejaculate or just to release the milk which is produced by the prolactin. So you have to remember prolactin is the milk producing hormone and the oxytocin is the milk releasing hormone. But the oxytocin देखिबनी how much milk is present in the breast. So our काम होची the only function of oxytocin is to release out the milk. So milk production hormone होची prolactin and milk releasing होची oxytocin. ठीक अछि milk production P for production P for prolactin. जदि मन रखियार अछि then you can apply this method PP. That means P for prolactin and P for milk producing, right? And oxytocin is realizing. Oxytocin is releasing. ठीक अछि आनंद PPOR PP prolactin and pituitary, sorry, prolactin producing hormone and also prolactin released from the pituitary. Ninja technique. P for prolactin and P for production hormone. And हम आउ भी ट्रिक कहै छै LH will act on the Leydig cell. तो LL बोली कहै छै and FSH रे कहैतले that is follicular stimulating hormone. H for Sertoli cell रे ऐड करिवो. ठीक अछि चलो oxytocin releasing and prolactin producing. Perfect. Next एई क्वेश्चन टा कोन हला ना that is alveoli and cavity of alveoli, then mammary tube. Suppose this is the alveoli and suppose this is the milk producing, right? So alveoli, then cavity of alveoli, then mammary tube. देखो ML MT MD MA मन रखिबो कोन ना आगो होची mammary lobe तापर mammary tube then mammary tube then mammary duct then mammary ampulla then nipple. ठीक अछि ML MT MD MA मन रहिजो एमति रे ML MT MD MA मन रहिबनी ML MT MD MA. ठीक अछि ताले तो से अनुसार करि परिबो MT MD MA तो एमति भी देखि करि परिबो MT MD MA. ठीक अछि ML MT MD MA mammary lobe, then it will link together to form the mammary tube, then the mammary duct and then the mammary ampulla, then leads to the that is lactiferous duct and then nipple. The time required to convert the primary follicle to mature follicle. Primary follicle ta mature follicle ho pai what is the time requirement? Kon of answer? Ankita A, Abhivsa, then yes sir, crystal clear. Thank you Shraddha Kitu, Trupti, Anita. देखो विद्यासागर रो जो लाइव सेशन होची ओनली फॉर टू रिवाइज तो तुम माने रिवाइज करि परिबो एंड आल्सो जा जा कांसेप्ट अछि तुम बुझा पड़िबो. तो क्वेश्चन को नै करी केतेटा पॉसिबल क्वेश्चन हेई पारे मु ताको नै ट्राई करबी. तो कंप्लीटली चैप्टर तो गोटे क्वेश्चन को नै कि आ बुझै हबनी बट टिके जदी जनरली आईडिया थिबो देन टिके एडजस्ट कर देले हेई जिवो. तो कोन आंसर द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द प्राइमरी फॉलिकल टू द मैच्योर फॉलिकल. फॉलिकल का कहया दैट इज oocyte surrounded with the granulosa cell. मन रखिबो दिस कॉल्ड एज प्राइमरी. तो जदी जनकर 28 डेज रो साइकिल तो 28 डेज साइकिल रो प्राइमरी फॉलिकल टा देन सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल देन टर्शियरी फॉलिकल देन द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड 14th डे रे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हेकी रिलीज करिवो दैट इज सेकेंडरी oocyte. तो 8 टू 8 दिन पर्यंत क्वेश्चन पचाछ हम जानि छे 1 रु 5th डे होची मेंस्ट्रुएशन फेज बा द फेज कंफर्म ए हबो ताले 5 रु 14 तारिख भितरे दैट इज ए हबो 9 टू 11 डेज स्वयं 9 टू 11 डेज राइट. ए ऑप्शन केमथि प्राइमरी फॉलिकल टा सेकेंडरी को टर्शियरी को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स हुए देन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हबो 14th डे रे देन रिलीज हबो सेकेंडरी oocyte एंड द ruptured ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज द corpus luteum. तो 5 तारिख रु दैट इज 14th डे पर्यंत माइनस कर दो केते 14 रु 5 गले सेही 9 रु 11 दिन आछी बी राइट. टिके रिलेट करिवो एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द प्राइमरी फॉलिकल टू द मैच्योर फॉलिकल and it is sir NEET biology ro syllabus already nta.nic.in that is the official website सेतिर तुम मेंशन करा आइछि.
ठीक अछि एंड को चैप्टर रिड्यूस हेछि एंड को चैप्टर किछि चैप्टर किछि पोर्शन ऐड हेछि देन यू कैन चेक टू द ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in. तो 9 to 11 and which hormone helps in short to ovulation? LH. चलो देन एठी मते क्वेश्चन पचारो corpus luteum will release dash hormone estrogen or progesterone. Which hormone will release the corpus luteum? corpus luteum कौन रिलीज करिवो estrogen or progesterone कौन अब आंसर corpus luteum will release the progesterone lepika truptimoi soyam voice of krishna then amaro bijoyini priyanshu payal dipti arpita lakshmi shraddha kitu gayatri om studies blogs sneha ankita sanjulata devasri chandan right that is progesterone ठीक अछि and then my question is estrogen and progesterone which hormone is necessary to maintain the corpus luteum sorry which to maintain the endometrium lining which hormone is responsible to maintain the endometrium lining of uterus which hormone estrogen and progesterone which hormone is directly involved or which hormone is responsible to maintain the endometrium lining of uterus right progesterone and am janiche there are three walls or three layers of uterus endometrium myometrium and perimetrium and one thing you have to remember here that is after the implantation pore endometrium ku that is ame kahi pariya kono na decidua after the implantation endometrium ku tame kahi paribo decidua ठीक अछि decidua after the implantation the endometrium lining is called as decidua then यार अछि अलगा अलगा ठीक अछि decidua basalis and decidua capsularis lyrid the next question fertilization takes place at fertilization takes place at isthmus infundibulum ampullary isthmus junction देखो biological science is very vast तो एमते नाही कि and the human reproduction by जोटा हम कहया embryology and organogenesis how the organ development takes place in the period from the first month to 9 month and completely procedure is very vast so it is not possible to that is derive all the concept in a single video so तम माने क्वेश्चन थ्रू रे जति पॉसिबल आमे करि पारे एंड तम पय जो लेवल रे दरकार स्ती भी करे दरकार नाउ इट इज वेरी फास्ट फाइनली डी हबो ampullary isthmus junction perfect then my question is pH of semen is acid or base pH of semen acid or base alkaline pH or the acidic pH of semen what is the pH of semen is acidic or basic कोन हबो semen is acidic or basic answer कोन हबो that is 7.5 basic बा जा को हम कहि पारे the pH of semen is slightly alkaline or slightly basic then pH of vagina acidic or basic pH of vagina acidic or basic कोन हबो pH of vagina acid or basic what is the answer here pH of vagina soyam lipika कोन answer answer is that is acidic pH right and the bacteria which is responsible for the maintaining the pH of vagina acidic lactobacillus acidophilus and acidic right and what is the pH of human blood pH of human blood कोन हबो what is the pH of human blood लिपिका स्वयं राधे राधे विवेक विजयनी lactobacillus lactoacid bacillus
by lactobacillus acidophilus जो बैक्टीरिया हमें कहूँ 7.4 pH of blood, that is 7.4. then को pH of urine, pH of urine 7.4 sarthak, perfect, that is 7.4. and what is the pH of urine? 120 ना 130 ना 4 ना 5 ना 7 कौन हो pH of human urine? what is the pH of urine? कौन हो pH of urine? कौन हला आंसर कोड गला कार 6.8 इतिश्री 6.8 ओके ठीक अछि तो 6 to 7 भितर चलो एंड बेले बेले मन रखिबो एंड हम जानि छे द फीमेल वाजाइना इज द माइक्रोबायोम और द हाउस ऑफ द मिलियन ऑफ बैक्टीरिया बट जदि हम देखिया दैट इज वाजाइना इज द हाउस ऑफ मिलियन ऑफ बैक्टीरिया एंड ता भितर हमर जेमति लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया छथि तो बेले बेले किछि भी बैड बैक्टीरिया भी अछथि तो समटाइम्स द बैड बैक्टीरिया ग्रोज more quickly than the good bacteria and बेले बेले भाजाइना रे बैड बैक्टीरिया गुडा को जल्दी जल्दी ग्रो करते than the good bacteria and this condition is called as BV বা bacterial vaginosis. Let it. तो चलो next question. Which part of the sperm helps in penetration into the ovum? Mitochondria, acrosome, tail. Then oogenesis को नेकी दिला question पचारिया तापर हमें next question जे which part of the sperm helps in penetrating the ovum? मेघना, सुब्रत, लिपिका, दीपांजलि, acrosome, right? जदि हम sperm रो स्ट्रक्चर करिया पूरा एते भी परफेक्ट स्ट्रक्चर न होबा दरकार. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर एंड मते को स्पर्म रो मूवमेंट फ्लैजेलर मूवमेंट ना सिलियरी मूवमेंट? स्पर्म रो मूवमेंट फ्लैजेलर ना सिलियरी? तापर को सपोज दिस इज द स्पर्म हेड एंड स्पर्म हेड रे देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी जा को हम कहि पारे एक्रोजोम. आदरे बहुत सारा एंजाइम थाए स्पर्म हेड रे गोटे कैविटी थाए आको हम कहले एक्रोजोम एंड एक्रोजोम भितरे एंजाइम सब थांती मे बी स्पर्म लाइजिन थाई पारे. देन जोना पेलुसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी थाई पारे. ठीक अछि जोना पेलुसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी थाई पारे. तो कौन है आंसर? फ्लैजेलर मूवमेंट, राइट? दिस इज द फ्लैजेलर मूवमेंट. देन स्पर्म रो हेड रे मते को क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द हेड पीस ना मिडिल पीस ना टेल पीस एंड नॉट नेक. हेड, मिडिल, टेल, नेक. In which region of the sperm the mitochondria is present? Mitochondria कोड प्रेजेंट है sperm रो head, middle piece, tail, middle piece, right? MM मन रख पारे MM middle piece mitochondria. ठीक अछि middle piece mitochondria बा middle piece रे mitochondria present. Then nucleus present in sperm रो head ना middle ना tail? Nucleus middle, mitochondria present in the middle piece, right? Then my question is head is present in head ta core head ta present sorry nucleus is present in head or middle or tail? कौन आंसर? that is head. NH जो जानी ना मैं NH16 NH17 NH2 तो NH मन रखि पारिबो that is nucleus ता head zone रे थाए and MM that is the mitochondria present in the middle place and the movement of the sperm is flagellar movement. चलो next. Second meiotic division in the secondary oocyte. Secondary oocyte रो second meiotic division केते बळे हुए? कौन हो? Second meiotic division in the secondary oocyte. पानी नहीं. Second कौन आंसर? फूल पानी. Second meiotic division in the secondary oocyte. The second meiotic division in the secondary oocyte.
कौन आंसर? सेकेंड मेयोटिक डिवीजन. Then complete after the penetration. ठीक अछि सर. सी confirm. Ananya, the branch of capillaries present in the Bowman's capsule is called as. A question answer कौन? Branch of capillaries present in the Bowman's capsule, glomerulus, तृप्तिमयी, Pormanic, C, A. This answer is A and C. Unequal and complete after the right. Perfect answer is A and C. ठीक अछि. The right answer is unequal division and complete after the. जो कुआ जायनि कि आम मानक आमे माने जोटु जन्म होइचंती बा आमे माने जो फॉलिकुलर मदर रो जो फॉलिकुलर डेवलप होइची से फॉलिकुलटा आम मा जेतबेले आम आई को पेटरे थिले सेतबेले जेकी से फॉलिकुलटा फॉर्मेशन हेइतिला. आमे माने जो फॉलिकुल रो फॉर्मेशन हेइचे तो आम मा जेतबेले हमर आई कर आंसर इज ग्लोमेरुलस राइट. द top capillaries present in the Bowman's capsule. The here is कौन कहल ना आमे जो फॉलिकुलर डेवलप होइची जेतबेले हम मा हमर आई कर पेटर थिले सेतबेले ही फॉलिकुल फॉर्मेशन हेतिला. कारण इन केस ऑफ फीमेल दैट इज फॉलिकुलोजेनेसिस बा फॉलिकुलर फॉर्मेशन हेइ जाय जेतबेले गोटे फीमेल बेबीटा मदर रो ओम रे थांती. ठीक अछि. तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ भाई क्वेश्चन 16 इज द लास्ट क्वेश्चन. तो चलो तुम पई होमवर्क क्वेश्चन दवा तीनटा तो आपको कमेंट रे जणेबो. होमवर्क क्वेश्चन होची तुम माने पई कौन दबा होमवर्क क्वेश्चन. चलो फर्स्ट दबा प्रथम क्वेश्चन रहिबो चिकन केस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड तार वैल्यू कौन? फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकंड क्वेश्चन, सेमिलुनार valve क्लोज होला बेले को साउंड. देन थर्ड क्वेश्चन, मेलानिन एंड मेलाटोनिन give the difference between melanin and melatonin. Fourth question, give the difference between the renin and RENNIN renin. Then fifth question, give the difference between the thiamine and thiamine. तो ये पांचटा क्वेश्चन तुम पाई होमवर्क. गणेश, ओम स्टडी, मनीषा, अन्नपूर्णा, रितिका, आशीष तो कंप्लीटली चारटा पांचटा को क्वेश्चन तुम आंसर दियो. आउ देन आउ दिटा क्वेश्चन दास बोनस रामनवमी उपलक्षे ए दिटा क्वेश्चन रहिबो. फॉर एग्जांपल तुमको कुकुर गोडेला. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉग एंड जेतबेले तुमको कुकुर गोडेची तो से टाइम रे adrenaline will release from adrenal cortex or adrenal medulla. Then आउ गोटे बोनस क्वेश्चन कोन लास्ट वन, T lymphocyte रो गैरेज बा where is the T lymphocyte maturation takes place. रामनवमी रो स्पेशल रे किछि नाही खाली क्लास पई डाकी देले श्रद्धा किटू पासिव absorption of water from the soil by the root mainly affected by कौन ऑप्शंस अछि दियो क्वेश्चन ताले कोन हला. तो एही होची तम मानकर क्वेश्चन रहिला दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कोन तार वैल्यू कोन. सेमिलुनार वाल्व क्लोज हेले तार कोन होबो. मेलानिन एंड मेलाटोनिन रो डिफरेंस, रेनिन एंड रेनिन रो डिफरेंस, सिंगल एन एंड डबल एन, थियामिन एंड थायमिन रो डिफरेंस. देन एड्रेनल कॉर्टेक्स ना मेडुला रो एड्रेनालिन एंड और एपिनेफ्रिन रिलीज होबो. देन टी लिम्फोसाइट रो मैच्योरेशन कोड होबो. दीज आर द होमवर्क. ठीक अछि. देन ए जो चैप्टर सरिला या बेसिस रे हमें नेक्स्ट क्लास रे आहुरी बहुत सारा क्वेश्चन हेई परियो एंड यार टॉप लेवल रो क्वेश्चन जेतले रैपिड फायर करिया तो जेतले चैप्टर को मिक्स अप करी रैपिड फायर करिया तो ए लेवल थारो आउ टिके अपर लेवल रो क्वेश्चन करिया एंड से रिलेटेड कोन कोन क्वेश्चन जदि हम स्किप करथिबा 100%
बहुत सारा क्वेश्चन हे परियो। म ऑलरेडी कहि छी बायोलॉजिकल साइंस इज वेरी वास्ट। तो क्वेश्चन को लेवल रे को फ्रेम रे भी जदि हमें डिराइव करियो चाहिबा डिराइव हे परियो। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें अलगा किसी टॉपिक आनी के आसीबा एंड आल्सो रैपिड फायर राउंड भी करिया। जो रैपिड फायर राउंड रे सब चैप्टर जेति जेति सरिची से रिलेटेड भी करिया। ठीक अछि। वॉइस ऑफ कृष्णा, थैंक यू महेश, गीतांजलि, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हैव ए नाइस इवनिंग एंड हैव ए नाइस नाइट। थैंक यू।